Hi guys, my name is Navneet. I'm having 15 years of experience. So I have worked with multiple technologies like Python, Java. I have worked as a developer and I'm having corporate experience. I have worked with SCL as well as with Wipro, and right now I'm associated with Rkdemy. So today we are going to discuss about Python. What is Python? What is the use of this Python? And what are the career opportunities of this Python? Okay. So actually we have a lot of programming languages. If we talk about programming languages, if we talk about programming languages, so programming languages is divided into two parts. Okay. The first one is known as
Hello. Hello. Sorry for the inconvenience, guys. Okay. Today what we are going to discuss, like introduction to Python, why Python, what are the use cases, and what are the career opportunities for this Python. Okay. So let me start with the basic, like what is Python. Okay. So we have heard about programming language. Okay, programming language. What is a programming language? How many types of programming languages are there? There are two types of programming languages. The first one is known as procedural programming language. The first one is procedural.
procedural, and other one is object oriented programming language. Object oriented. Oops. Okay. So these are the two programming languages. One is procedural. Procedural means if suppose line by line, I want to execute line by line. If I want to execute the code line by line, then we have to go through procedural programming language, or we can say it is also known as functional programming language. Okay, object oriented, I want to run the code according to my requirement. Suppose I'm having 5 lines of code is there. I want to execute line number 5 first. Okay, then means according to our requirement. Suppose this line I want to execute first, this line I want to execute second. Then this we can achieve through object oriented programming concept. Okay, so what are the main pillars of this object oriented programming? Like if we talk about like the 5 main pillars of this object oriented programming. Okay, the first one is class and object. Second is inheritance. Third one is known as polymorphism. Fourth, encapsulation, and the fifth one is known as abstraction. So what is this Python? So Python is both procedural as well as object oriented programming language. Okay, so we can say that Python is both है ना, object procedural as well as object oriented programming language. We might have learned this C language, C++, Java. Okay, these are the other languages, C#. Okay, so C language is an procedural or functional. After that, C++, it is object oriented. This is procedural. This is object oriented programming language. Java is also an object oriented programming language. C# object oriented programming language. Okay, so Python is both procedural. Hello. Hello. Python is used for. These are the different scopes, or we can say applications we can develop by using this Python. So if we talk about some history of this Python, okay, like when Python came, like some history, okay. So Python came in 1991, 1991. Python came in 1991, okay, and its first version was released like Python 1.0, version.
This was the first version. If suppose, see over here, if we open this Python, this is the official website for this Python, python.org. This is the official website for this Python. Okay. See, if we come on this, see, downloads option, okay, download option. From here we can download this Python, है ना? And this is my latest release for this Python. All releases, है ना? And see, you can go on this on all releases. Over here, you might be seeing, see, Python 3. Python 3.11.11. What is that? है ना? So this is the version, है ना? Now let me explain you, है ना? If suppose I'm writing, if suppose I'm writing 3.11.11, okay, so this is known as version, this is known as version, and this is known as subversion, this is known as subversion, and this is my patch level, this is known as patch level means, है ना, वॉट एवर बग्स, जब भी कोई नया मेरा चीज ऐड होता है, इफ सपोज आई एम एडिंग सम न्यू इम्प्लीमेंटेशन इज मेड इनसाइड दिस, है ना, दिस इज द वर्जन जब भी चेंज होगा तो बहुत ज्यादा पाइथन में चेंजेस आएगा। सब वर्जन में क्या होगा, थोड़ी सी चेंजेस अगर आई, है ना, देन दैट इज नोन एज सब वर्जन। अब सब वर्जन में अगर कोई भी लाइक इफ सपोज ए माइनर बग्स कम्स, जब भी हम लोग कोई नया एप्लीकेशन बनाएंगे तो कुछ ना कुछ उसके अंदर बग्स आते हैं, और वो बग्स जो सॉल्व होता है उसके लिए एक नया पैच लेवल मेरा बनता है, राइट, है ना। तो ये पैच लेवल देखोगे, है ना, लाइक integrated Hello. Hello. Fossy language में क्या use turbo 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 plus plus turbo C plus plus, right? After that, for Python we can use, है ना, PyCharm, we can use PyCharm. So what is this ID? ID stands for Integrated Development Environment. Integrated Development Environment, like Turbo C. Turbo C क्या है ना? This is the third party tool. ID क्या होता है? ये मेरा third party tool है. This is a third party tool. ये थर्ड पार्टी टूल है ना। दैट मींस कोई दूसरी कंपनी मेरे को प्रोवाइड कर रही है दिस आईडी, है ना। किस लिए प्रोवाइड कर रही है? व्हाई इट इज गोइंग टू प्रोवाइड दिस आईडी? सो दैट आवर वर्क्स becomes easier। जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, we don't have to write a single line of code over there, we don't have to write a single line of code, है ना। each and every suggestions we are going to get through this id। नहीं तो नोटपैड, वी आर हैविंग दिस नोटपैड, ओके, नोटपैड पे भी हम लोग कर सकते हैं डायरेक्टली, एंड थ्रू द सीएमडी वी कैन एग्जीक्यूट द कोड, है ना। सो हम लोग पाइथन में कौन सा आईडी यूज कर सकते हैं? वी हैव पाइचार्म, वी हैव पाइचार्म, पाइचार्म, जुपिटर, जुपिटर, स्पाइडर, 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 है ना, और भी बहुत सारे हैं, है ना, एनाकोंडा, है ना, लॉट ऑफ आईडीज आर देयर। तो हम लोग बेसिकली बात करेंगे, कोई भी ले लो, लाइक यू कैन टेक पाइचार्म, यू कैन टेक लाइक सम जुपिटर, है ना। सो पाइचार्म किसने प्रोवाइड किया? पाइचार्म जेट ब्रेन्स, द कंपनी नेम इज जेट ब्रेन्स, जेट ब्रेन्स, जेट ब्रेन्स इज द कंपनी विच हैज प्रोवाइडेड दिस पाइचार्म, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है।
First you need to download this Python. पहले Python download करना है. After that you have to go through PyCharm. देखो किस तरह से PyCharm download होगा, है ना. Download PyCharm. Just write download PyCharm. Download PyCharm. Click on enter. देखो ये रहा JetBrains. See the company name. JetBrains. ये मेरी कंपनी है which is going to provide this IDE. देखो लिखा है ना the Python IDE for data science. The Python IDE for data science and web development. The Python है ना web development. दोनों इसमें हम लोग कर सकते हैं. Data science में भी हम लोग यूज कर सकते हैं as well as we can go for web development. है ना. So click on this. After clicking on this, देखो यहाँ पे दो तरह की चीजें मिलेंगी, है ना. First one is professional version and other one is community version. See, community edition. Community edition is free of cost. See, over here you will be getting free built on open source. That means this is free of cost. And this professional version is paid. है ना, only 30 days trial is there. Only 30 days trial is there. And after 30 days, they are going to charge. Okay. So we have to click on this. Download Windows. For Windows, if you want to download, anyone you can download. Just click on that and click on next and install that one. So I already have this PyCharm over here. So see, this is the logo. If you install, you will be seeing like this PyCharm. See, PyCharm Community Edition. PyCharm Community Edition. PyCharm Community Edition. Just double click on this. डबल क्लिक करना इसके ऊपर, है ना. नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट सम प्रोजेक्ट. अब प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे. किस तरह से हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, है ना. सी, है ना, यू हैव टू क्लिक ऑन this file, new project, file, new project. Over here you have to write, if you want to specify your project name, so I can write like, है ना, my project, my first app, my first app. Where it is storing inside the C user PyCharm project, है ना. And click on create. If you want to create a new window, you can use this new window, or if you want to use on this window, you have to click on this window. So any option you can. So I want to use on this window. इस window पे मेरे को use करना है. अब पहले वाला project चला गया. Now see, है ना, my first app. This is my project. Over here we have to develop, है ना, एक Python file. Python file मेरे को बनाना है ना. तो Python file जो भी हम लोग create करेंगे उसका dot extension होता है .py, है ना. .py is the dot extension. देखो यहाँ पर, है ना, how to create a file. And see, this is virtual environment. VENV stands for virtual environment. Automatically ये environment create कर लेता है ना. After that there are a lot of libraries, scripting, है ना, git ignore. Okay, so these are some character structure. So you have to right click and new Python file. Over here just write the file name, है ना. So any name we can like write, है ना, like some first app. Not required to give .py extension. Automatically it is going to add the py extension. Now see, I'm pressing enter. Press enter. See, automatically my file got created, first app.py. Automatically it has added the py extension. Suppose I want to write some piece of code, like I want to print hello. See, over here just write PR. See, automatically I got some suggestions, है ना, what you want to use. So I want to use this print statement. Okay. And over here inside the double quotes, whatever I'm writing, hello, welcome to the, है ना, Python session. Okay. And just save the code and right click. ये मैंने लिखा, क्या लिखा, print के अंदर hello, welcome to Python session. And right click over here, and run. See, over here you will be getting one option, run first app. So you have to click on run first app. See, this is my console part. This is known as console. So on console, what output I'm going to get? Hello, welcome to the Python session.
like this we can write, है ना. This is how to print, है ना, something on the console. Okay, now next see. So I know. Now we are going to start with data types. What are the data types in Python? Okay. What do you mean by data types? Data types का मतलब क्या होगा? What do you mean by data types? अगर मैं नॉर्मल इंग्लिश की मैं बात करता हूं, इफ वी टॉक अबाउट नॉर्मल इंग्लिश, है ना, नॉर्मल इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, तो इंग्लिश लैंग्वेज में सपोज आई एम राइटिंग ओनली ए, आई एम राइटिंग ओनली ए, suppose I am writing only A, then this is known as alphabet. Okay, if I am writing like apple, this is a word, है ना, this is a word. If I am writing this is an apple, then this is a sentence, If suppose I am writing like 10, then this is known as integer or number. We can call it like number. If I'm writing 10.5, this is known as decimal number. This is known as decimal number. So similarly, है ना, ये इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, है ना. अगर मैंने लिखा 10.5 डेसिमल नंबर, इफ आई एम राइटिंग 10 तो इसे नंबर कहा जाता है ना. तो सिमिलरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमें इसे कहा जाता है डेटा टाइप्स, है ना. तो देयर आर लॉट ऑफ डेटा टाइप्स इन पाइथन, है ना. जैसे कि, है ना, इफ यू टॉक अबाउट इंटीजर, है ना, इफ यू राइट लाइक 10, तो 10 कैसा ट्रीट होगा? इट इज एन इंटीजर टाइप. इफ आई एम राइटिंग 10.5, है ना, इफ आई एम राइटिंग, if I'm writing like 10.5, I am writing. Okay, so this is known as float data type. Float. This is known as float data type. Okay, if I'm writing like something like A, है ना, A or ABC. Okay, so this is known as string. str. That means string data type. String data type we call it, है ना. After that, you might have heard of this boolean, true and false, है ना. तो boolean कैसा होता है? boolean data type true and false. boolean means true and false. boolean means true and false. अब देखो यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल, है ना, अब देखो यहाँ पे याद है हम लोग पहले सी में, यू माइट हैव लर्नड इन सी लैंग्वेज, हम लोग कैसे लिखते थे सी में? हैश इंक्लूड हैश इंक्लूड stdio.h. After that, hash include tonio.h. After that, we are writing void main. अब यहां से मेरा प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है, void main, है ना. And inside this main function, we are going to define the data types. Like for example, I am writing int a equals 10. That means I am assigning this 10 value. To this a. And what is the type of this a? Integer. Type क्या है a का? This is an integer type. If suppose I am writing float f equals 10.5 f. This is a float type. That means मैंने यहां बताया है कि ये जो 10.5 है ये कैसा है, ये किसमें स्टोर किया? f में. और f कैसा टाइप का है? फ्लोट. बट पाइथन में इट इज नॉट मैंडेटरी टू डिफाइन. इसमें डिफाइन हमें बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पाइथन खुद डिटेक्ट करेगा अपना टाइप. पाइथन इज गोइंग टू डिटेक्ट इस टाइप ऑटोमेटिकली. एंड इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो पाइथन का पहला प्रॉपर्टी क्या हुआ? Python is a dynamically typed programming language. Python is dynamically typed
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब समझो यहां पर, है ना। सी एक एग्जांपल मैं करके दिखा रहा हूं। यहां पे मैं लिख रहा हूं a इक्वल्स 10, है ना। आई वांट टू गेट व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस ए का टाइप क्या है ना। सो आई एम गोइंग टू राइट प्रिंट टाइप ऑफ ए, प्रिंट टाइप ऑफ ए, राइट। नाउ सी पाइथन मेरे को बताएगा, है ना, इट इज गोइंग टू टेल मी व्हाट टाइप ऑफ दिस ए। देखो क्लास इंट करके आ गया यहाँ पे, सी आउटपुट क्या आया मेरे पास, क्लास इंट, सी ओवर हियर क्लास इंटीजर। ऑटोमेटिकली, है ना, इट हैज गिवन दैट ये मेरा कैसा टाइप का है, दिस इज एन इंटीजर टाइप। इफ सपोज आई एम गोइंग टू राइट लाइक b equals 10.5, 10.5. Now see again I am going to print type of, देखो एक भी लाइन, you don't have to write a single line of code। देखो मैं suggestions का यूज कर रहा हूं, I'm using this suggestions, okay, so you have to also use this suggestion। यही this is the advantage of IDE, यही advantage है सबसे ज्यादा IDE का, है ना। like, है ना, if you want to print like type of b, automatically it is going to detect, है ना, the class float, है ना। अब यहाँ पे क्लास क्यों आ रहा है, व्हाई इट इज गिविंग लाइक क्लास। ये डायरेक्टली भी तो बता सकता है कि ये मेरा फ्लोट डेटा टाइप है ना। बिकॉज पाइथन में, इन पाइथन ईच एंड एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट किसका बनता है, क्लास का बनता है ना। सो पाइथन ईच एंड एवरीथिंग, इफ यू आर डिफाइनिंग दिस ए, इफ आई एम राइटिंग दिस ए, देन ए इज एन ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, दिस इज द क्लास इंटीजर, क्लास इंटीजर। ये बी किस क्लास का है, ऑब्जेक्ट, दिस इज फॉर ऑब्जेक्ट फॉर दिस क्लास फ्लोट। क्लियर गाइस, है ना। नेक्स्ट, similarly for string suppose I am writing like s equals abc, okay, and I want to print, देखो class str type of s, type of s, क्या आ जाएगा, ले से class str, that means string, class string। क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट, तो इस तरह से कितने हमारे पास बेसिक डेटा टाइप्स हैं। तो बेसिक डेटा टाइप्स, पता है ये पाइथन हमारा डेटा साइंस में भी यूज होता है। तो हमारे पास एक और डेटा टाइप्स इसके अंदर आता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। व्हाट डू मीन बाय कॉम्प्लेक्स, याद है क्लास 11 में हम लोग ने पढ़ा था, है ना, 10 प्लस 20 आई, 10 प्लस 20 आई, एंड वेयर आई इज एन इमेजिनरी पार्ट, आई की वैल्यू क्या होता है, रूट ऑफ -1, रूट ऑफ -1, दैट मींस ये आई की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ -1, इट इज एन इमेजिनरी पार्ट, दिस इज नोन एज रियल पार्ट, रियल, दिस इज नोन एज रियल पार्ट एंड दिस इज नोन एज imaginary part, this is known as imaginary part, right, है ना, real and imaginary, and this type of data type is known as complex data type, है ना। see one example I'm going to show you। print of, है ना, suppose I want to, है ना, write some, है ना, a b x equals, है ना, 10 प्लस, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 20 j, i नहीं लिखा था, यहाँ पे j लिखा जाता है ना। over here we are going to write this j, and j it stands for imaginary, है ना। now I want to get like what is the type of this x, है ना, print type of this x, type of x, type of x, okay। so what I am going to get class complex, see class complex। आई वॉन्ट टू प्रिंट, मेरे को चेक करना है कि 10 मेरा रियल पार्ट है कि 20 मेरा रियल पार्ट है, एंड विच इज माई इमेजिनरी पार्ट, है ना। सो आई वॉन्ट टू प्रिंट लाइक प्रिंट, है ना, प्रिंट रियल, है ना, व्हाट इज माई रियल पार्ट, रियल, है ना, प्रिंट ऑफ, है ना, डॉट रियल, है ना, मेरे को रियल पार्ट इसका प्रिंट करना है, इसका रियल कौन सा पार्ट है, रियल, है ना। एंड आई वांट टू प्रिंट द इमेजिनरी पार्ट, आई वांट टू प्रिंट सम इमेजिनरी पार्ट, एस डॉट इमेज सी imag, है ना। नाउ सी राइट क्लिक एंड आई एम गोइंग टू गेट, देखो यहां पर, है ना, पहला मेरा क्या आया, फर्स्ट आई गॉट दिस क्लास,
इसका मेरा क्लास आया, क्लास कॉम्प्लेक्स। आफ्टर दैट रियल पार्ट कौन सा है? दिस इज 10.0 इज माय रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज 20, सो दिस इज रियल एंड दिस इज एन इमेजिनरी। ओके, तो वी कैन दिस, ये सब क्यों यूज होता है इन साइड दिस डेटा साइंस या न्यूमेरिकल पाइथन में हम लोग यूज कर सकते हैं ये। उसके बाद है ना हमारे पास ये बेसिक हमारे पास डेटा टाइप, दीज आर दी बेसिक डेटा टाइप्स, है ना, विच इज देयर इनसाइड दी पाइथन। अब समझो हमारे पास कुछ एडिशनल एरेज का कॉन्सेप्ट नहीं रहता है पाइथन में। इन पाइथन देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एरेज, है ना। एरेज का मतलब इन सी लैंग्वेज में पढ़े होगे एरेज, सी लैंग्वेज, है ना। क्या है एरे? एरे क्या होता है? एरे इज ए कलेक्शन ऑफ, array is a collection of homogeneous type of data. Array is a collection of homogeneous type of data. But in Python we don't have array concept. तो इसे हमें जो भी डेटा टाइप यूज दिया गया है for defining this array we have list type of data. List, the first one is list, second one is tuple, second is tuple, third one is set, third one is set, fourth frozen set, frozen set, frozen set, डिक्शनरी, DICT, डिक्शनरी, DICT, है ना। तो अब जब हमारे पास लिस्ट है, व्हेन लिस्ट इज देयर तो टपल की क्या जरूरत है, व्हेन सेट इज देयर तो फ्रोजन सेट की क्या जरूरत है ना। डिक्शनरी का क्या यूज है, फिर उसका बाइट्स करके भी हमारे पास एक डेटा टाइप बाइट्स, है ना, एंड बाइट एरे, बाइट्स एंड बाइट एरे, है ना, ये भी मेरा डेटा टाइप में आता है ना। सो ये हम लोग कब यूज करते हैं? when we want to take heterogeneous types of object, है ना। when we want to, if my requirement is to take heterogeneous types of object, heterogeneous types of object, heterogeneous means, heterogeneous का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर मेरे पास इंटीजर भी हो, फ्लोट हो, कॉम्प्लेक्स हो, है ना, बुलियन वैल्यूज हो, है ना, देन वी कॉल इट एज हेटेरोजेनियस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे किस तरह से हम लोग यूज करेंगे लिस्ट, टपल, सेट। फिर उसके बाद हम लोग ये करेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिस्ट, है ना, एंड टपल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेट एंड फ्रोजन सेट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बाइट एंड बाइट एरे, है ना। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। सबसे पहले हम लोग आएंगे लिस्ट के ऊपर, लिस्ट, है ना। सो लिस्ट को हम लोग कह सकते हैं इफ वी वांट टू टेक, है ना, इफ वी वांट टू टेक, है ना, heterogeneous types of object into as a single entity, है ना। if we want to take, if we want to, if we want to take heterogeneous, heterogeneous types of object as a single entity, as a single entity, as a single entity, then we should go for list type of data, है ना। जिसके अंदर कंडीशन क्या है? द फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन की मैं बात करता हूं, है ना। द कंडीशन, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? सबसे पहला मेरा कंडीशन है डुप्लीकेट्स आर अलाउड, है ना। लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट्स मेरा अलाउड है ना। इनसाइड दिस लिस्ट डुप्लीकेट्स आर अलाउड, डुप्लीकेट्स मेरे अलाउड है इसके अंदर। सेकंड, इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड, insertion order is preserved, है ना। second, insertion order is, insertion, insertion order is preserved. Insertion order is preserved means, insertion order preserved means कि जिस ऑर्डर में हम लोग एंट्री कर रहे हैं इन द सेम ऑर्डर आई एम गोइंग टू गेट द आउट, है ना। आफ्टर दैट थर्ड, स्लाइसिंग इज पॉसिबल, स्लाइसिंग, स्लाइसिंग, स्लाइसिंग इज पॉसिबल, slicing is possible, slicing is possible, slicing means breaking into pieces, breaking into pieces, slicing, breaking into pieces, है ना। the fourth one is, है ना, slicing is possible, heterogeneous, heterogeneous objects can be inserted, heterogeneous object
कैन बी इंसर्टेड, है ना, हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। एंड फिफ्थ वन इज, है ना, इसे हम लोग किस तरह, कौन से स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे? वी आर गोइंग टू यूज दिस स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। कुछ भी चीजें अगर हम लोग लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, देन दैट रिप्रेजेंट ए लिस्ट टाइप ऑफ डेटा। देखो किस तरह, है ना, प्रोग्रामिंग, लेट्स चेक इट आउट इन द प्रोग्रामिंग, है ना। मैंने लिखा क्या, है ना, कुछ भी, वी कैन टेक एनीथिंग, है ना, लाइक ए इक्वल्स स्क्वायर ब्रैकेट। once we are providing this square bracket, है ना, I want to print type of A, I want to print this type of A, I want to print, see once again, मैंने क्या किया, है ना, A equals only just, है ना, A, क्या मैंने लिखा है, C over here, है ना, A and square bracket, and I want to print the type of this A, I want to print this type of A, print type of A, print type of A, print type of A, है ना। नाउ सी क्या आना चाहिए, क्लास लिस्ट। आई हैवंट इंसर्टेड एनीथिंग, अभी मैंने कुछ भी इसके अंदर एंट्री नहीं दिया है। देखो क्लास लिस्ट, जैसे ही मैंने ये लिखा मैंने, है ना, लाइक सम स्क्वायर ब्रैकेट, तो ऑटोमेटिकली पाइथन ने डिटेक्ट किया दिस इज ए लिस्ट टाइप ऑफ। अब इसके अंदर हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं वैल्यूज, है ना। आई एम इंसर्टिंग लाइक 10 कॉमा 20 कॉमा, है ना, 34 कॉमा, है ना, 3 कॉमा 4, है ना, 20, है ना, आफ्टर दैट 10, I want to insert some complex number 10 plus 20j. This is my complex number, comma. String values I can insert like some Rkdemy. This is a string value, है ना. I want to insert Boolean value like true. This is my Boolean value. I want to insert decimal values, float values. See, and I want to print. I want to print this A. Print of A. Print of A. Print of A. Now see. दी आउटपुट, है ना। अब यहां पे देखोगे पहला पॉइंट, है ना, डुप्लीकेट्स आर अलाउड, सी डुप्लीकेट्स आर अलाउड, 10 10 20 20 डुप्लीकेट्स आर अलाउड। अब जिस ऑर्डर में मैंने इंसर्ट किया, देखोगे सेम ऑर्डर में मेरे को आउटपुट, क्लियर। सो फर्स्ट मेरा पॉइंट क्या था, द फर्स्ट पॉइंट वाज, है ना, डुप्लीकेट्स आर अलाउड। पहला मेरा पॉइंट क्या था, डुप्लीकेट्स आर अलाउड, है ना, ये मैंने दिखाया, है ना। सेकंड, इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व, तो इंसर्शन ऑर्डर मेरा यहाँ पे प्रिजर्व हुआ। अब हम लोग देखेंगे स्लाइसिंग किस तरह से हम लोग करेंगे, है ना, हाउ वी आर गोइंग टू प्रोवाइड दिस स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट। स्लाइसिंग मींस ब्रेकिंग इनटू पीसेस। देखो अब मैं इसे पीसेस में, है ना, आई वांट टू ब्रेक दिस, है ना, प्रिंट ऑफ, है ना, what is my this one A, and the syntax for this slicing is, है ना, this syntax, पहले एक बार ध्यान समझो syntax क्या होता है। स्लाइसिंग का syntax होता है A and this square bracket, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, पता है ना, इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है, इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट इज देयर, है ना। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे स्टार्ट इंडेक्स, स्टार्ट इंडेक्स, स्टार्ट इंडेक्स कोलन, स्टार्ट इंडेक्स कोलन एंड इंडेक्स, एंड इंडेक्स, and after that step, after that we need to write some step, है ना। स्टेप क्या होता है, क्या गैप रहेगा मेरा, है ना। सपोज फॉर एग्जांपल, है ना, यहाँ पे देखो एक बार प्रोग्रामिंग में, I want to get, I want to get the value, like I want to start from this 20 20, see the values, what values is there, है ना। I want to start with this 20 से start करना है मेरे को, है ना, and I want to print 20 10 and 10.10 plus 20j। तो 20 कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, इंडेक्स हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होता है इंडेक्स, है ना। तो दिस इज 0 1 2 3, मतलब स्टार्ट इंडेक्स मेरे को कहां पे रखना है, थर्ड पे रखना है, एंड एंड मेरे को कहां पे करना है, 10 plus 20j, 3 4 5, दैट मींस वी हैव टू प्रोवाइड एंड इंडेक्स एज 6। देखो यहां पर, है ना,
कितने से स्टार्ट करना है? फ्रॉम दिस 4 0 1 2 3 3 से स्टार्ट करेंगे, है ना, एंड लाइक सम 6 6, है ना. नाउ सी आई एम एग्जीक्यूटिंग द कोड. देखो आ गया ना, है ना. 20 10 20 10 एंड दिस वन 10 प्लस 20 जे, है ना. तो ये मैंने क्या किया, इसे, है ना, स्लाइसिंग किया. दैट मीन्स वी हैव ब्रेक इनटू पीस. अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या है? व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, है ना. मेरे को अल्टरनेट प्रिंट करना है, लाइक 10 एंड आई वांट टू टेक वन गैप, लाइक 20 मेरे को प्रिंट नहीं करना. आफ्टर दैट 30, फिर 20 स्किप करना है. आफ्टर दैट 10 अगेन 10 प्लस 20 जे स्किप आर्केडेमी, फिर ट्रू स्किप 10.5. तो उसके लिए हम लोग स्टेप मेंशन स्किप आर्केडेमी अगेन ट्रू स्किप, है ना. तो 10.5. अगर मैं 3 करता हूं तो दो दो स्टेप्स मेरे मिस होंगे, है ना. तो दो दो स्टेप्स मेरे मिस होंगे, है ना. सपोज आई वांट टू प्रिंट दिस 3, है ना. तो यहाँ पे मेरे कितने स्टेप्स होंगे? दो स्टेप्स मिस आउट होंगे. दैट मीन्स 10 के बाद ये दोनों मेरे मिस हो जाएंगे, 20 एंड 3. अगेन 10 के बाद क्या आएगा? 20. अगेन फिर दो स्टेप्स मिस होंगे, है ना. सो लाइक दिस वी कैन डू दी स्लाइसिंग, है ना. दिस इज दी स्लाइसिंग विच वी कैन डू इनसाइड दिस, है ना. और एक, है ना, एंड आफ्टर दैट एक और इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है ना. वन मोर फीचर इज देयर इनसाइड दिस 6 ऑप्शन. वन मोर फीचर, इट इज म्यूटेबल, है ना. दो तरह की चीजें होती है, एक होता है म्यूटेबल, है ना, एक होता है इम्यूटेबल. म्यूटेबल, इट इज म्यूटेबल, म्यूटेबल और इम्यूटेबल. सो म्यूटेबल मींस आई वांट टू, इफ आई वांट टू परफॉर्म एनी चेंजेस, है ना, ऑन द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, देन दैट इज नोन एज म्यूटेबल. Immutable means, है ना, we cannot perform any changes on the existing object, है ना. That is known as immutable. Mutable means we can perform the changes on the existing object, है ना. मैं लिख दे रहा हूं, we can perform, we can perform the changes on the existing object, existing, है ना. एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग चेंजेस कर सकते हैं. वी कैन परफॉर्म द चेंजेस ऑन द एग्जिस्टिंग. कैसे करेंगे, है ना. सी भैया, है ना. सी, अब मैंने क्या किया है, एक पहले से मैंने डिफाइन करके रखा हुआ है, उसके ऊपर मेरे को कुछ चीजें ऐड करनी है. आई वांट टू ऐड सम लाइक, है ना, लाइक दिस इज, है ना, ऑनलाइन सेशन, ऑनलाइन सेशन आई वांट टू ऐड, है ना. सो मैंने यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए डॉट. सी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मेरे को मिल रहे हैं, अपेंड, पॉप, इंसर्ट, रिमूव, है ना. सो आई वांट टू ऐड समथिंग, तो उसके लिए हम लोग अपेंड यूज करेंगे. एंड ऑनलाइन, ऑनलाइन सेशन, है ना, ऑनलाइन सेशन I have added. Again, I want to print this. Again, I want to print the value of this A. Now see, right click, run first app. देखो यहाँ पे online session मेरा add हो गया. That means on an existing object, I have made the changes. है ना? I made the changes on the existing object. है ना? So this property is known as mutable. This is known as mutable. If anyone will have any doubt, you can drop me message in the chat session. Okay? Now, what is tuple? अब tuple क्या है? What do you mean by tuple? है ना? Tuple is tuple. अब आते हैं tuple के ऊपर. What is tuple? Tuple. हेलो.
है ना, जस्ट चेंज दिस ब्रैकेट, है ना, जस्ट चेंज दिस from this square bracket to simple bracket, and now I want to print the size. Now I want to print the size. आया ना यहाँ पे टपल, क्लास टपल, है ना। उसके बाद प्रिंट किया मैंने, पहले मैंने प्रिंट किया टाइप ऑफ दिस ए, तो टाइप में आया मेरा क्या, क्लास टपल। उसके बाद मैंने वैल्यूज प्रिंट की, दिस इज माय वैल्यू। उसके बाद स्लाइसिंग, स्लाइसिंग इज पॉसिबल, तो स्लाइसिंग भी होके आया यहाँ पे। अब देखो जैसे ही मैंने अपेंड किया, आई वांट टू मेक सम चेंजेस, सी आई गॉट एन एरर, आई गॉट एन एरर। क्या एरर दे रहा है मेरे को, रीड दिस एरर, है ना। अपेंड ये नहीं कर सकता, टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट लाइक, मतलब कि हम लोग कोई भी चेंजेस एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं, फॉर दैट आई गॉट सम, है ना। So tuple is immutable, you cannot perform any changes. Next set, अब यहां पे set, set के बाद, हाँ देखो एक क्वेश्चन है, क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग, है ना, शॉर्टिंग, अपेंडिंग एंड रिमूविंग द एलिमेंट। देयर इज वन क्वेश्चन, है ना, क्रिएट, क्रिएट करना, है ना। आई वांट टू क्रिएट समथिंग, है ना, क्रिएट मैंने किया, क्या मैंने क्रिएट किया, आई वांट, आई हैव क्रिएट, या मैंने लिस्ट क्रिएट किया, ए जो मैंने क्रिएट किया दैट वाज ए लिस्ट और टपल। उसके बाद उसमें मॉडिफाई किया, आई वांट टू मॉडिफाई समथिंग, है ना, तो उसमें हम लोग मॉडिफाई करेंगे। सॉर्टिंग मींस अरेंजिंग इट इनटू लाइक, मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। अपेंड मींस एडिंग समथिंग, रिमूविंग, है ना, रिमूविंग द, इफ यू वांट टू रिमूव सम एलिमेंट, सपोज फॉर एग्जांपल ओवर हियर इनसाइड दिस, inside the tuple it is immutable, तो मैं इसे लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं, आई एम कन्वर्टिंग, है ना। आई वांट टू रिमूव, आई वांट टू रिमूव, है ना, तो क्या लिखेंगे, है ना, ए डॉट, ए डॉट, है ना। ओवर हियर वी हैव एन ऑप्शन ऑफ रिमूव, है ना, रिमूव, देखो शॉर्ट का भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो रिमूव, आई व्हाट यू वांट टू रिमूव, 10 आई वांट, एंड अगेन आई वांट टू प्रिंट दिस ए, एंड आई वांट, है ना, राइट, देखो यहाँ से 10 मेरा रिमूव हो गया, विच 10, सी दिस 10 गॉट रिमूव, एंड उसके बाद मेरा आउटपुट कहाँ से आ रहा है, 20, क्लियर, है ना। तो इस तरह से हम लोग, है ना, वी कैन मेक सम चेंजेस, कैन मेक सम। आफ्टर दिस हमारे पास आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सेट का, है ना, सेट एंड फ्रोजन सेट, सेट एंड फ्रोजन सेट, समझो यहाँ पे क्या होता है, सेट, सेट एंड फ्रोजन सेट। फर्स्ट हमारे पास टपल लिस्ट में क्या था, डुप्लीकेट्स आर अलाउड, बट इन सेट डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड, डुप्लीकेट्स आर नॉट, duplicates are not allowed. Second, insertion order is not preserved. Insertion order is not preserved. We will do practical also. Insertion order is not preserved. Insertion order is not. Okay. Third, insertion order is not preserved. Slicing is not possible. Slicing possible नहीं है. Slicing is not possible. Slicing is not possible. Slicing is not possible. Fourth property है ना, heterogeneous objects are allowed. Heterogeneous objects are allowed. Okay. Heterogeneous objects are allowed. और इसके लिए कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज दिस कर्ली ब्रैकेट, वी आर गोइंग टू यूज दिस कर्ली ब्रैकेट। देखो किसी ने क्वेश्चन पूछा कि पॉप, है ना, पॉप हम लोग क्यों यूज कर सकते हैं, है ना, बताता हूं। देखो रिमूव और पॉप में डिफरेंस क्या होता है ना।
है ना। पॉप हमेशा हम लोग स्टैक के लिए यूज करते हैं। स्टैक में पता है एंट्री किस तरह से होती है, दिस इज माई एंट्री, है ना। स्टैक के लिए हमारा दिस इज माई स्टैक, दिस इज माई स्टैक, है ना। सपोज लिस्ट में अभी हमने कौन कौन से एलिमेंट्स इंसर्ट किए थे, 10 20, है ना। यहाँ पे मैंने 10 20 30 40 50। अब पता है ये जो स्टैक है, दिस फॉलो, है ना, ये कौन सा एल्गोरिदम फॉलो करता है, फर्स्ट जो मेरा है ना, ये इंसर्शन ऑर्डर हुआ, मतलब सबसे पहला मेरा एंट्री कौन सी हुई, 10 इज माई फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री क्या हुई, सेकेंड, है ना। अब इसे रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, है ना, ये फॉलो करता है जो मेरा फर्स्ट इन होगा वो लास्ट में आउट होगा, है ना। या हम लोग कह सकते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में इन होगा वो मेरा फर्स्ट में आउट होगा, जो लास्ट में इन है वो मेरा पहले आउट होगा, है ना। दिस इज द एल्गोरिदम विच इज फॉलोड बाय द स्टैक। तो यहां पे अगर पॉप यूज करोगे तो जो तुम्हारी पहली एंट्री होगी दैट इज गुड, लेकिन जब मैंने रिमूव यूज किया तो जहां पे मेरा फर्स्ट 10 उसे मिलेगा दैट इट इज गोइंग, लेकिन पॉप में क्या है, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा दैट इज क्लियर गाइज, है ना। अब देखो यहां पर, है ना, सेट हेटेरोजेनियस ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड, है ना। आफ्टर दैट कर्ली ब्रैकेट 6, है ना। अब म्यूटेबल है या ये इम्यूटेबल, सो दिस इज, है ना, इट इज 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 म्यूटेबल, दैट मीन्स है ना, म्यूटेबल मीन्स वी कैन परफॉर्म दी, यहां पे हम लोग इज परफॉर्म कर, वी कैन परफॉर्म दी चेंज साइड दिस सेट। अब फ्रोजन सेट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रोजन सेट, है ना, फ्रोजन सेट क्लियर, फ्रोजन सेट। तो ये भी बिल्कुल सेट की तरह है, सेम एज सेट, जैसे लिस्ट टपल में क्या डिफरेंस था, लिस्ट सेट लिस्ट एंड टपल बोथ आर सेम, ओनली द डिफरेंस वाज इट इज म्यूटेबल एंड अदर वन इज इम्यूटेबल। सेम यहां पे भी हमारा, है ना, सेम एज सेट, सेम एज सेट, सेट की तरह, द ओनली डिफरेंस इज, ओनली डिफरेंस इज, है ना, फ्रोजन सेट आर इम्यूटेबल, देन that is frozen set is immutable, you cannot perform any immutable, है ना, frozen set is immutable, that means you cannot perform any this, है ना। देखो एक एग्जांपल करते हैं, दिस एग्जांपल कौन सा यूज करेंगे, ब्रैकेट, विच ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, है ना। ये सब अभी मैं, आई वांट टू प्रिंट द टाइप, क्या आया, क्लास सेट, क्लास सेट, और उसके बाद उसने वो, है ना, आई वांट टू प्रिंट, आई प्रिंटेड द एंट्री, व्हाट आर द एंट्रीज इनसाइड दिस सेट, है ना। नाउ आई वांट टू, अब देखोगे जब ये प्रिंट किया यहां पर, इसका ऑर्डर मेरा देखो कुछ और आ रहा है, ये मेरा ऑर्डर है क्या, मैंने सबसे पहले क्या इंसर्ट किया, 10, आफ्टर 20 3 20 10, है ना। लेकिन देखो इनसाइड दिस आउटपुट, है ना, आउटपुट में देखो हमारा जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर देखो सेम नहीं है, और देखो यहाँ पे 10 मैंने दो बार इंसर्ट किया है, 10 एंड 10, 20 एंड 20, देखो वो डुप्लीकेट्स भी यहाँ पे रिमूव कर दिया, बिकॉज डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड एंड इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड, क्लियर। नाउ आई वांट टू ऐड सम, है ना, आई वांट टू ऐड लाइक ऑनलाइन सेशन, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ए डॉट, देखो ऐड करके मेरे पास फंक्शन ऐड, है ना, क्लिक ऑन दिस ऐड, क्या मेरे को ऐड करना है, ऑनलाइन सेशन, अब ये क्या लास्ट में ऐड होगा, है ना, नहीं, ये मेरा कहीं पर भी रैंडमली ऐड हो गया। नाउ सी आई वांट टू प्रिंट दिस ए अगेन, है ना, देखो रैंडमली कहीं पर भी आ सकता है, ऑनलाइन से रैंडमली कहीं पे भी आया, सपोज आई वांट टू ऐड समथिंग एल्स, है ना, ए डॉट ऐड, है ना, आई वांट टू ऐड लाइक सम 100, अगेन आई वांट टू प्रिंट ऑफ ए, राइट क्लिक, रन एप्लीकेशन, देखो कहां पे ऐड होके आया, 100, है ना, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द ऑर्डर, हम लोग ऑर्डर इसका प्रिडिक्ट, राइट, है ना। सो ये मेरा, है ना, इफ यू वांट टू क्लियर, है ना, देखो यहाँ पे क्लियर करके भी ऑप्शन है, ए डॉट क्लियर, क्लियर, है ना, तो ये क्या करेगा, पूरे सेट को क्लियर कर देगा, अगेन प्रिंट ऑफ ए, देखोगे कुछ भी नहीं मेरे को,
एम्प्टी सेट देन एम्प्टी, राइट। अब आते हैं फ्रोजन सेट के ऊपर, है ना। फ्रोजन सेट क्या होता है? फ्रोजन सेट, है ना। अब हमारे पास, है ना, द ओनली डिफरेंस मैंने क्या बोला? इट इज इम्यूटेबल, कैन नॉट परफॉर्म इन। अब हमारे पास कितने ब्रैकेट? दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज फॉर के लिए हमने यूज कर लिया, सिंपल ब्रैकेट हमने यूज किया टपल के लिए, कर्ली ब्रैकेट हमने यूज किया सेट के लिए। नाउ नो ब्रैकेट, है ना। तो फ्रोजन सेट हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे? वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द सेट इनटू द फ्रोजन सेट। वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द सेट, है ना, ए के अंदर। लाइक सपोज वी हैव, मेरे पास क्या है? ए इक्वल्स, तरह से मेरे पास सम लाइक है 30, some values आते हैं। Now I want to convert this set into frozen set. So for converting this set into frozen set, we can write, है ना, टाइप कास्टिंग इसके लिए करेंगे। fs equals, है ना, we have to write frozen set इसे कन्वर्ट करना है, a को कन्वर्ट करना है। अब इसका fs का अगर मैं टाइप प्रिंट करूंगा, then I am going to get then class frozen set। देखो एक एक, ये मेरा सेट है, दिस इज माई सेट, दिस इज माई सेट, है ना। अब इसे मेरे को कन्वर्ट करना है फ्रोजन सेट में। कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल, वेरिएबल कैन बी एनी नेम, है ना। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रोजन सेट, है ना। एंड विच वन आई वांट टू कन्वर्ट? आई वांट टू कन्वर्ट दिस। अब इफ आई वांट टू प्रिंट दिस टाइप ऑफ ऑफ एफएस, तो एफएस का टाइप क्या आ जाएगा? फ्रोजन सेट, आई वांट क्लास फ्रोजन। अब fs में हम लोग ऐड नहीं कर सकते, देखो यहाँ पे a में ऐड कर रहे हैं ना। इफ आई एम राइटिंग fs डॉट ऐड, है ना, fs डॉट ऐड, देखोगे एरर आ जाएगा, है ना। सी एरर, है ना। क्या बोल रहा है ना, फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ऐड, दैट मींस आर कैन नॉट परफॉर्म इन, दैट इज नोन एज इन। You have any doubt, you can drop me on. Clear? Now next concept, dictionary, है ना। नेक्स्ट डेटा टाइप इज डिक्शनरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्शनरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिक्शनरी डेटा, so if we want to डिक्शनरी, है ना, डिक्शनरी डेटा, है ना, है ना। क्या इसमें होगा डिक्शनरी? इफ वी वांट टू टेक द वैल्यूज, वी वांट टू टेक द वैल्यूज इन फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स, है ना, है ना। इफ वी वांट टू, है ना, डिक्शनरी, है ना, क्या लिख सकते हैं? इफ वी वांट टू टेक, if we want to take the values, we want to take the values in form of key value pairs, key value pairs, key value pairs, है ना, की वैल्यू पेयर्स। अब इसके लिए भी कंडीशन है मेरे पास, वी हैव सम कंडीशन फॉर दिस, है ना। व्हाट इज दैट कंडीशन? वेयर की कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड, की कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड, की को डुप्लीकेट नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट डुप्लीकेट दिस की, वेयर की कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड, बट वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेटेड, बट वैल्यूज कैन बी, है ना, वैल्यूज को हम लोग डुप्लीकेट कर, वैल्यूज कैन बी, क्लियर, है ना। तो अब ये मेरा, है ना, डिक्शनरी, जैसे कि, है ना, डिक्शनरी देखे होगे सब लोग, है ना। डिक्शनरी में क्या होता है? वर्ड एंड मीनिंग, है ना। डिक्शनरी में क्या हम लोग यूज करते हैं? वर्ड एंड मीनिंग, क्या मीनिंग एंड मीनिंग, है ना, यही होता है। वर्ड क्या मेरा सेम रहता है क्या? वर्ड, लेकिन मीनिंग हर कुछ वर्ड्स के क्या होते हैं? मीनिंग सेम होते हैं।
है ना. सो जस्ट लाइक दैट, है ना, ये वर्ड किस तरह मेरा परफॉर्म कर रहा है, दिस परफॉर्म्स लाइक की एंड दिस मीनिंग परफॉर्म्स लाइक वैल्यू, वैल्यूज, है ना. अब इसे डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, फॉर डिफाइनिंग दिस डिक्शनरी, है ना, वी हैव, अब कोई ब्रैकेट नहीं है, तो अब देखोगे जैसे ही मैं कर्ली ब्रैकेट में लिखूंगा, कर्ली ब्रैकेट, है ना, डिक्शनरी के लिए भी हम लोग कर्ली ब्रैकेट भी. अब देखो अभी मैं अगर कुछ भी नहीं दे रहा हूं वैल्यूज, है ना, सी वन एग्जांपल आई एम गोइंग टू सी वन एग्जांपल, सी वन एग्जांपल, है ना. I want to like d equals only curly bracket open close, only curly bracket open and close, है ना, and I want to print type of d. बता सकते हो what output I am going to get, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट तो हम लोग सेट के लिए भी यूज कर रहे हैं और डिक्शनरी के लिए भी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इस केस में क्या आएगा आउटपुट, what output I am going to get in, अगर मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, सिंपल, है ना, सेट के लिए भी अभी हम लोग ने जस्ट देखा कर्ली ब्रैकेट, है ना, वहां पे क्या आ रहा था क्लास सेट, लेकिन अभी मैंने जस्ट एम्प्टी मैंने रखा है कर्ली, नथिंग आई एम गोइंग टू प्रोवाइड, है ना, एंड आई एम गोइंग टू प्रिंट दिस डे, है ना. देखो आउटपुट क्या आएगा, है ना, क्या आएगा, यस एनीवन, व्हाट आउटपुट आई एम गोइंग टू गेट, सी क्लास DIC, क्लास डिक्शनरी, मतलब अगर हम लोग कोई भी वैल्यू है बाय डिफॉल्ट वो कैसा होता है, इट्स, है ना, वो सेट नहीं, अगर कोई भी वैल्यूज इसके अंदर अगर मैं इंसर्ट कर रहा हूं, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया 10 एंड 20, 10 एंड 20, सी 10, 20, अब ये आ जाएगा मेरा सेट, सी क्लास सेट, क्लास सेट, मैंने 10, 20 इंसर्ट किया, क्लास सेट. अब अगर मैं की वैल्यूज पेयर ले रहा हूं, इफ आई एम टेकिंग की वैल्यू पेयर्स, देखो किस तरह से की वैल्यू पेयर्स ले, आई वांट टू प्रिंट स्टूडेंट रोल नंबर एंड नेम ऑफ द स्टूडेंट, okay, so this is my key, है ना, this is my roll number 101, है ना, colon 101 colon and like some Rohit, okay, 102 102 colon Sohit, right, है ना, 103 colon Mohit, है ना. Now see, if I want to print, है ना, I want to print the value of this D, क्लास डिक्शनरी, और यहाँ पे देखो 1 फॉर 101 फॉर रोहित, 1 रोहित, 102 सोहित, 103 मोहित. अब देखोगे यहाँ पे जैसे ही ना, है ना, दिस 101 क्या है मेरा, दिस एंड दिस इज माय वैल्यू. अब देखो की को मैं डुप्लीकेट कर रहा हूं, आई एम डुप्लीकेटिंग दिस की, ओके, अगेन आई एम गोइंग टू प्रोवाइड लाइक 101, अगेन 101, है ना. अब यहाँ पे मैं कुछ देता हूं आर्केडेमी, है ना, आर्केडेमी आई एम गोइंग टू यूज. अब देखोगे 101 यहाँ पे क्या हुआ मेरा, यहाँ पे मेरा की मेरा डुप्लीकेट हुआ, तो जैसे ही की मेरा डुप्लीकेट होगा तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन जो रोहित है वो रिप्लेस हो जाएगा किसके द्वारा, आर्केडेमी. तो अब 101 में क्या आएगा, आर्केडेमी, है ना, सी, देखो यहाँ पर अब 101 में क्या हुआ, आर्केडेमी, बिकॉज की कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड बट वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेटेड. अब देखो वैल्यूज में डुप्लीकेट आ रहा हूं, रोहित, अगेन यहाँ पे मैं रोहित दे रहा हूं, रोहित, दो नाम है 101 में रोहित, एंड दिस टाइम गोइंग टू राइट लाइक 105 का 104. नाउ रन फर्स्ट, देखो यहाँ पर, है ना, रोहित रोहित, वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेटेड बट बट की कैन नॉट बी, क्लियर, है ना. इफ आई वांट टू गेट ओनली द कीज, है ना, और ये देखो यहाँ पे हमें सिर्फ कीज चाहिए, मैं क्या लिखूंगा प्रिंट के अंदर, है ना, डी डॉट की. इफ आई वांट टू प्रिंट ओनली द वैल्यूज, तो डी डॉट वैल्यूज, डॉट वैल्यू, है ना, रन दिस ऐप. देखो ये मेरा की हो गया, एंड दिस इज माई डिक्शनरी अंडरस्कोर की एंड डिक्शनरी अंडरस्कोर, क्लियर गाइज. If you have any question, drop me in chat session. Clear? Now next.
है ना। तो ये मेरे बेसिक, दिस वाज है ना बेसिक इन। नेक्स्ट हम लोग तो एक टास्क है यहाँ पे, जस्ट अभी हमने किया है ना। टास्क लिस्ट मैनेजर, डेवलप ए पाइथन प्रोग्राम टू मैनेज ए टास्क लिस्ट लिस्ट एंड टपल इंक्लूडिंग ऐड किया, रिमूव किया, अपडेट, शॉर्टिंग एंड शॉर्ट करना है ना। वी हैव डन है ना दिस वन। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा क्वेश्चन, डिक्शनरी में शॉर्ट करना, रिट्रीव करना डेटा, रिट्रीव शॉर्टिंग करना है। तो ये शॉर्ट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे है ना। सी यहाँ पे ऑप्शंस है, यू हैव द ऑप्शन प्रिंट है ना, डी डॉट है ना। यहाँ पे देखोगे हमारे पास आइटम्स अपडेट करके भी ऑप्शन आ रहा है, सी अपडेट है ना। अगर मैं लिखता हूं है ना, सी अगर मेरे को इसे अरेंज करना है ना, पॉप आइटम्स, सी पॉप है ना, गेट आइटम्स, गेट है ना, गेट यूज कर सकते हैं, क्लियर करना है, क्लियर कर सकते हैं साइट। तो दिस आर दी है ना डिफरेंट मेथड्स, ये मेरे क्या है फंक्शंस हैं है ना, फॉर डूइंग दिस है, जैसे रिट्रीव करना है ना, लोग कर सकते है ना। और ये मेरा शॉर्टिंग ऑर्डर में देखो, हमेशा शॉर्टिंग ऑर्डर में आए इस तरह से, राइट। नेक्स्ट, same, write a Python program to create, update and manipulate a dictionary of student record including their grades है ना। तो ग्रेड और अटेंडेंस के बाद हम लोग आएंगे बेसिक। देखो, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट ए पाइथन प्रोग्राम है ना, दैट पहला क्या कर रहा है, प्रॉम्प्ट कर रहा है यूजर को है ना, टू एंटर देयर नेम, का नेम एंटर करने के लिए, एंड प्रेफर्ड ग्रीटिंग स्टाइल, आउटपुट ए पर्सनलाइज्ड ग्रीटिंग मैसेज यूजिंग द इनपुट वैल्यू है ना। इनपुट वैल्यूज का हम लोग यहाँ है ना, वी आर गोइंग टू यूज दिस इनपुट वैल्यूज। तो दैट मीन्स अभी हम लोग क्या कर रहे थे, इफ आई एम राइटिंग लाइक है ना, अगर मैं लिख रहा हूं एस इक्वल्स वेलकम, वेलकम, वेलकम टू आर्केडेमी, एंड वी आर गोइंग टू प्रिंट दिस, प्रिंट ऑफ एस, प्रिंट ऑफ एस। तो ये एस जो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, दिस इज माय मैनुअल इनपुट, दिस इज माय मैनुअल इनपुट। नाउ आई वांट टू टेक द वैल्यू, यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू एंटर द वैल्यू, कौन एंटर करेगा, प्रॉम्प्ट द यूजर, यूजर इज गोइंग टू है ना एंटर द वैल्यू। तो जब भी हमें यूजर से इनपुट लेना होता है, देन इन दैट केस वी हैव टू यूज इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट है ना। इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज इनपुट एंड आउटपुट। इस तरह से यूज करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस इनपुट एंड आउटपुट है ना। उसके लिए हमारे पास इनपुट फंक्शन, इनपुट फंक्शन, we have input function है ना। इनपुट फंक्शन देखो किस तरह है ना, सपोज आई वांट टू टेक सम नेम है ना, नेम, नेम इक्वल्स इनपुट, 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 एंटर द नेम ऑफ, एंटर द नेम, एंटर द नेम, एंटर द नेम, एंटर द नेम है ना। इनपुट में मैंने क्या लिखा, एंटर द नेम, तो वो नेम जो मेरा लेगा कंसोल से, वो कहां जाएगा, मेरे पास नेम के अंदर जाएगा। एंड आफ्टर दैट आई वांट टू प्रिंट, मेरे को प्रिंट करना है ना, नेम प्रिंट करना है, क्या बोल रहा है, एक ग्रीटिंग उसमें देना है ना। तो मैं चाहता हूं वहां पे क्या है ना, हेलो, यू आर, हेलो लाइक जो भी नेम है मेरा, हेलो रोहित, यू आर मोस्ट वेलकम है ना। मेरे को क्या प्रिंट करना है, हेलो, हेलो, जो भी नेम हो, जो भी नेम है ना, तो यहाँ पे हमें कॉमा देना है, और फिर क्या देना है, नेम, हेलो रोहित है ना, यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट, आर मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट। इस तरह से हम लोग इनपुट लेंगे एंड आई एम गोइंग टू प्रिंट दी आउट, कॉमा यहाँ पे मेरे को ऐड करना, और ये नेम क्या है, दिस इज माई वेरिएबल है ना, इसे डबल कोट्स में नहीं है ना। वो जो भी चीजें एज इट इज मेरे को कंसोल के ऊपर प्रिंट करना है, दैट वी आर गोइंग टू राइट अंडर डबल कोटेशन, ये हमें डबल, देखो इसमें मैंने डबल कोट्स नहीं लगाया। नाउ सी आई एम प्रिंटिंग, है ना। क्या लिखना, नेम, नेम इक्वल्स, इक्वल्स
है ना, int input is the function, enter the name, enter your name, enter your name. After this I want to print, है ना, क्या है मेरा, hello, hello, and I want to print this name, your name and comma, you are most है ना, now see if I execute this, बोल रहा है enter your name, है ना, so I want to write some रोहित, देखो यहाँ पे आया, है ना, hello रोहित you are most, hello रोहित you are, इस तरह से हम लोग इनपुट यूज, सपोज फॉर एग्जांपल ये तो नॉर्मल हमने इनपुट एंड आउटपुट, अब मेरे को ऐड करना है, आई वांट टू ऐड समथिंग, है ना, आई वांट टू ऐड लाइक नंबर्स, आई वांट टू ऐड 2 नंबर्स, देखो यहाँ पे आई वांट टू ऐड, है ना, मेरे को चाहिए लाइक मेरे a equals है ना like some 10, b equals like some 20, and I want to add this, I want to add equals a plus b, a plus b. I want to add this one, and I want to print the addition of this two number, and I want to take the input from the user, I want to take the input from the user, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, what I am going to write, है ना, a equals है ना, input enter the value of a, enter the value of, enter the value of a, and b equals input enter the value of b, enter the value of b, enter the value of b, and finally c equals a plus b, और उसके बाद मेरे को प्रिंट करना है, आई वांट टू प्रिंट, है ना, the addition of two number is कोलन डबल कोटेशन कॉमा, क्या प्रिंट करेंगे हम लोग, तो क्या आउटपुट आएगा, व्हाट आउटपुट आई एम गोइंग, यस टेल मी व्हाट आउटपुट आई एम गोइंग, suppose I am entering the value of a as 10, I am entering the value of b as 20, a का 10 b का 20, तो आउटपुट सी में क्या आएगा, व्हाट आउटपुट आई एम गोइंग, यस एनीवन ड्रॉप मी इन द चैट सेशन, विजिबल, नाउ सी, है ना, a equals है ना, इनपुट enter the value of a, enter the value, after that b equals है ना, input enter the of b, value of b, यहाँ पे वही, right, है ना, and similarly I am defining one variable as c, and over here I am adding both, and finally I am print of the addition of two number two is the addition of two number is, है ना, and I want to print this c, c, yes, can anyone tell me what output I am going to get, now I am a 10 and b value 20, what output I got, 10 and क्या मेरे को आया 30, यहाँ whether I got this 30 नहीं आया, है ना, क्या आया मेरे पास 10 and 20, देखो 10 and 20, तो 10 and 20 आया, what output I got over here, 10 and like this, 10 and 20, because ये इसलिए आया बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट जो इनपुट स्टेटमेंट है, ये मेरा जो डेटा टाइप्स लेता है दैट इज str, टाइप का, है ना, और ये मेरा स्ट्रिंग हुआ, एंड दिस इज आल्सो स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को जब हम लोग ऐड करते हैं, ये ऑटोमेटिकली कॉनकैटिनेट हो जाता है, बोथ द वैल्यूज गेट कॉनकैटिनेट, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक इनपुट में, मतलब जो भी हमने इनपुट किया है उसे मेरे को क्या करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है, कि आगे मैं क्या लिखूंगा, INT, है ना, इसे मैंने टाइपकास्ट किस
क्या इंटीजर में मैंने टाइप कास्ट किया। अब मेरा वैल्यू क्या आएगा 30। अभी देखो एक बार मैं दिखा रहा हूं, है ना, टाइप मैं दिखाता हूं, ए का टाइप क्या ले रहा है, बी का टाइप क्या ले रहा है बिफोर एडिंग, है ना। आई वांट टू प्रिंट द टाइप ऑफ ए एंड बी, आई वांट टू प्रिंट द टाइप ऑफ ए एंड बी, है ना। प्रिंट प्रिंट टाइप ऑफ, प्रिंट टाइप ऑफ ए एंड प्रिंट टाइप ऑफ बी, प्रिंट टाइप ऑफ, है ना। नाउ सी add first, है ना, see the value of a, now I'm printing this type of a, run first, है ना, enter the value of a, I given like 10, है ना, enter the value of b। देखो ऑटोमेटिकली इफ आई प्रेस दिस एंटर, देखो कैसा ये क्लास ले, कैसा है क्लास, क्लास str is there, and after addition ये मेरे को क्या दे रहा है 10 is 8। अब जब मैं इसे कन्वर्ट करूंगा, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू राइट int int, तो यहाँ पे int ऑटोमेटिकली, है ना, and over here bracket have to close, and over here also you have to write integer, है ना। तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, इट इज गोइंग टू कन्वर्ट दिस स्ट्रिंग इनटू एन इंटीजर, जिसे हम कहते हैं टाइप। नाउ अगेन आई एम एंटरिंग द वैल्यू ऑफ दिस 10 एंड आई एम एंटरिंग वैल्यू ऑफ b इज लाइक 20। अब देखो क्या आया, क्लास इंटीजर एंड इज क्लियर, like this, है ना। we can perform the, I want to multiply two number, है ना, so for that, है ना, we can multiply also two, है ना। I want to find the power of two number, है ना, 10 comma 20, now see 200। I want to find the power, है ना, so power means double asterisk, double asterisk, double asterisk, है ना। see click run, enter the value of a like 2, है ना, enter the value of b 4, 2 की power 4 3, है ना। सो दीज आर दी ऑपरेटर्स, है ना, दीज आर दी ऑपरेटर्स, है ना, ऑपरेटर्स। तो कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर देयर, है ना। सबसे पहला मेरा कौन सा ऑपरेटर होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर इज देयर, फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक, अरिथमेटिक ऑपरेटर, क्या होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, है ना, जिसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, एंड दिस वन इज मॉड्यूलो, मॉड्यूलो डबल स्टार डबल एस्ट्रिक एंड डबल डिवाइड, these are the है ना। double star is used for power, if suppose I am writing 2 double star 4, 2 double star 4, that means 2 to the power 4, clear। What is difference between divide and modulo, what is difference between this divide and this modulo? Suppose for example I want to divide like this 9, 2 divided by 9, so 2 fours are 8 and the remainder is 1, so if I write 9 divided by 2 and 9 modulo 2, 9 modulo 2, so in case of divide, I am going to get the quotient as an output, and in case of this modulo I am going to get remainder as an output, here I am going to 4, I am going to as clear। उसके बाद है ना, आफ्टर दैट, है ना, सी यहाँ पे एक प्रोग्राम देखो, है ना, एक्सप्लोरिंग बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस इन पाइथन, राइट, ए पाइथन प्रोग्राम टू एक्सप्लोर बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन व्हिच वी हैव डन, है ना, अभी एडिशन, है ना। द प्रोग्राम शुड प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर टू नंबर्स, क्या बोल रहा है प्रोग्राम में, हमें क्या करना है, यूजर को बोलना है कि हमें दो नंबर ऐड करना है, वी हैव टू ऐड टू नंबर्स एंड देन परफॉर्म द एडिशन, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शंस आई वांट टू परफॉर्म, मल्टीप्लिकेशन आई वांट टू परफॉर्म, डिवीजन मॉड्यूलस ऑपरेशन ऑन दोज नंबर्स, सबके ऊपर मेरे को, एंड रिजल्ट ऑफ ईच ऑपरेशन शुड बी डिस्प्लेड बाय द यूजर। सिमिलरली यू कैन डू लाइक दिस, है ना, सी
अब यहाँ पे हमने क्या किया, लाइक I perform some addition. Now see, I'm taking two number from the user A and B. First I want to perform like addition, so for addition I'm going to use A. For addition I'm going to use A plus B. For suppose D equals, I want to multiply, so A into B. I want to find modulo E equals modulo, like some, A divided by B. This is my then, and F equals A modulo, and I want to print the value. I want to print. So for printing the value, I'm going to write print function. Inside the print function, the of two number of is, है ना, is है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, है ना, लाइक हम सी, एडिशन मेरा किस में स्टोर्ड है, सी के अंदर स्टोर्ड है, प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन of two number is, है ना, the multiplication of two number is, comma क्या आना चाहिए, d should be the output. After that print the, after that modulo, the division of two number is, है ना, so that two number is क्या आना चाहिए, e, डिवीजन मेरा e के अंदर स्टोर्ड है, तो इनसाइड दिस e प्रिंट the modulo, the modulus of a and of two number is क्या आना चाहिए, like where I am getting this value inside this f. Now see, I am executing. Enter the value of a 10, enter the value of b, है ना, 2, है ना. Now see, तो यहाँ पे addition 12, multiplication 20, division 5. तो here guys, any doubt in this, anyone? Guys, any doubt, किसी को कोई भी डाउट है ना, if you have any question drop me in the
Okay, so today we are going to wind up. Tomorrow same time we are going to with the further guys.